My task is very easy because each of my esteemed co-panelists are so eminent to speak about this issue of diversity, inclusion and equity that my task is very easy to just ask them questions and just like you, listen to their brilliant inputs. But before that, I would like to, just set things in context on what the minister touched upon and ma'am you also said was why is this issue even an issue in a country like India? I mean, in a country where 3 generations and in fact 4 generations stay under the same roof harmoniously, right? Do we ever ask a question of diversity and diversity issues? 30 to 40% of household wealth is even today, in the hands of the mother in form of jewelry and all. Do we ever look at any kind of diversity issues there? Why is it that when we look at workplaces, this question of diversity and inclusion comes around? Is it that the workplace environment, which should be a reflection of the Indian community itself, right? Has it somewhere failed to keep up with the principles of diversity and inclusion, which comes so naturally to an Indian mindset? Have we really, in the pursuit, and I'm 28 years in the corporate world, so I stand as guilty as anybody else. In the pursuit of probably profit or efficiency as we call it, or we have various other names to hide our, we have really, kind of excluded a large section of society. So what I'll do today is, I really want to know and keep in front of you what is the real situation of the Indian corporate world. What are the actual practices which affect diversity, inclusion, and equity? I hope I don't need any, ma'am has clarified those 3, diversity, inclusion, and equity in her, form very, very well. But for equity, which is the toughest of all, I would like to give you an example. What is equity and what is equality? Right? Some of you, please raise your hands again if you feel that you have a confusion between these 2 terms, equity and equality. आप लोगों को इसके बीच में confusion है equity और equality में? Okay, good. So I'll give you an instance and then you'll have to tell me what is equity and what is equality, okay? So in a company, you are given 12 holidays. And everybody in the company has to take those 12 holidays. Okay? Is it equity or is it equality? Equality. Sorry? Equality. That's right. And what is equity then? Stake in the company. Sorry? Stake in the company. I wish everybody had a stake in the company. Well, yeah, so that's another form of equity. But what equity is that we realize that there are people of different ethnicities and give those same 12 holidays, the liberty of them taking different holidays. When I heard this example, it was absolutely clear to me like day and night. We all talk about equality, but equity is so easy to miss. What they say is, sometimes some things which are so clear to the vision are also very easy to miss, right? So without wasting much time, and I'm sure you're eagerly waiting to hear other speakers. So why let me come to you? You don't want to hear you, sorry. Okay. Hello. Hello. Okay. Is that close enough? So Payal, let me come up
front to you. I mean, while you are a leader in your own right, running your startup, but you also represent an industry, a high-tech industry, the tech and IT industry, which is very people-inducive. You know, a lot of people come in, and so you would be struggling with issues like, or your erstwhile employers would be struggling with issues like diversity. What is the situation in a very people-intensive service industry with respect to diversity and inclusion? Thank you, Saurabh. Really happy to be here in this August gathering. And thank you so much, Karma Foundation, for inviting me to be a part of this esteemed panel. Before I answer your question, Saurabh, I'll just take forward the example of equity. And I'm talking about a conference that I attended, which was all the stalwarts of tech industry and, let's say the top 20%. And when we were all sitting there, this consultant who was basically taking us through diversity, this is very sensitive, guys, so I hope. Okay. So the way the consultant started was, he put up this slide and said, okay, so how many of you live in the towns or grew up in cities? The next question was, how many of you drive cars? How many of you live in air-conditioned houses? How many of you had access to education in English medium, right? And, when we looked at that, we realized that the 20% who were sitting there were privileged. We were there not just because we are brilliant, but because we were given the right opportunities. And unfortunately, not everyone gets those opportunities. There is a whole wide world who's much more brilliant, but may not have access to all the opportunities that we got. And if we look at the tech industry today, tech and services, it employs, it's majorly a labor-intensive organization. If you look at diversity, and I'll start with gender diversity, only 33%, the gender diversity ratio is 33%. Unfortunately, this figure goes to almost 25% when we talk about key technical and engineering roles. And when we come to leadership position, it falls below 15%. So in some companies, the number is as low as 8 to 9%, right? And Saurabh, while I would love to say that India belongs to a culture where there is inclusivity in our homes. I have been in this culture. I have worked with a lot of women in the tech industry, and somehow that equity is not there. Especially from a gender perspective, the care of the house and the kids, as per our culture, falls on women. So you see a lot of women actually giving up their careers if they don't have support. Right? Today I'm on this table because I was privileged enough and I had support, I could afford support, but not everyone does. The other thing about diversity is that it's not just about gender, and we did speak about various other parameters like ability, their sexual orientation, ethnicity, religion, and no organization and no country can grow till our growth is not inclusive, until all parts of the population don't come together and contribute to the growth of the country and the economy. Only then the growth will be sustainable. Yeah. If you want me to add, there are some initiatives that the services industries has taken, despite which the numbers look so dismal. But a lot of these initiatives, and I think they are common among the media, technology, BFSI industry. It starts with
recruitment and hiring process, ensures that there are some earmarked roles which are for diversity candidates. Return to work for working mothers has been taken up by almost all the large IT companies. COVID to some extent has really helped women, because now work from home, flexible working hours is a common norm, and something which everyone realizes that works. The second is creating employee resource groups. So these are voluntary groups of employees who share the same interests, the same identity, such as sexual orientation, gender, and they help in advocating within the organization and within the industry the need to network and help the members of this team. Accessible work design for specially abled people, as well as there are lots of initiatives like now for LGBTQI community, at least in the IT industry. We see gender neutral washrooms, mentoring and coaching. You Accelerate as a coaching platform works with a lot of organizations in helping them build cultures which are diverse and inclusive. And we see a lot of leadership coaching, a lot of training for behavioral changes that happens in the industry, a lot of focus on pay equity. However, that said, there needs to be some hard look on the strategy and what we need to do in order to increase the numbers further. Thanks, Saurabh. We have a round of applause for Payal, it's really heartening to know that a sector that we all look forward to, that has really created a name in the world for India. I mean, the respect that India has got has primarily been because of the IT sector, and your sector is doing so much to get not only gender diversity but all forms of diversity. But I guess the figures are still quite shocking, 8 to 15% at leadership levels. Probably it will be worse than the banks right now. Banks would have a much better one, and much better. And probably my industry, which is a manufacturing sector, which will be the worst. So why don't we come to one sector which is probably most diverse, and media, I would like to really say, Bharat, is absolutely one sector where we not only have a lot of diversity, not only of gender, it has all the ethnicities, all the region, region diversity is so important. But what's also more important, I would also like to hear your thoughts about the consumer. The consumer is getting ready to accept diversity. And here I have a small example of a company which makes Barbie dolls, right? So for a long time we saw that their sales were going down from 2000 to 2015. They were like really dropping 25% a year. But that is the time they realized that the the products that they were making were not making sense. People had moved on, right? So they hired a lot of designers, etc., to create models. And 3 years later, when they came up with 150 different designs of dolls, including specialties and all, and they really went back. So it makes commercial sense as well. So Bharat, let me get media industry both from inside in terms of what as well as Thank you so much, Saurabh. So, thank you everyone for organizing this panel discussion. It's an honor and privilege to be here. So, adding to the earlier comments, I would like to begin with giving a landscape overview of India. So, today India is 1.4 billion population. It's the largest population in the world. The second important factor is that 50% of the population is now connected and adds up to about 750 million internet users. So imagine the democratization of information which would be powered through this generation. Third, 65% of the population is under 35 and India is getting younger.
Now, so this is just the demography, right? Now, in terms of literacy, it is 73% of the population is literate, but the contribution of women in literacy is maybe about 65 to 68%, right? So now that's the second part, the divide and the kind of jobs which are coming in importance of literacy. Now, as we proceed further, so when we go back to 80s, the literacy rate was maybe about 40% and India was amongst a cohort of poor nations. And now let's go back to, now let's look at 2027 when India will turn into a $5.7 trillion economy and it is going to be the third richest economy in the world, right? So now that is the growth which we are looking at, right? So these are all opportunities which lie in front of India. But what is the biggest challenge? So I would say the challenges are the geography, languages, gender, and even access or privilege to education or information, right? So let me begin by starting with youth. So before I touch upon youth, most of us know as a news company, but we have over the years diversified into education, health, women, fashion, and these are the new content streams which we have ventured into, right? And to cater to this new audience and this new change, we began our journey by defining a vision that to produce factual and credible content that empowers New India through knowledge, information and voice towards an inclusive and progressive society. So I think that's that underlining message which is going to the content teams, that the content has to be produced to enable this youth, enable them with the right kind of information, knowledge, give them voice to understand these changes, to prepare for the opportunities and grow in life, right? Now when we come to youth, I think there are two things. One is privilege to education, and the second factor is while 90% of the country speaks in regional or Indic languages, and it's just 10% who speak English, but a lot of emphasis has been given to English in terms of knowledge sharing, in terms of access. So if you do not understand English, then your chances to access the right kind of information is reduced, right? So as a community, what are the efforts which we are doing to democratize this information into language, right? So that's also inclusive. And how do you reach out to all these people who are not, or 90% of India, who are not consuming in English, right? Another thing, that because of this startling fact, when we look at youth, there was a survey which we conducted in Hindi Heartland, and only, you'll be surprised to know that only 17% of youth got ever a chance to go through a career counseling session. And it is staggering. So like now when we look at our kids, so I think now things have changed so much between when we were studying, when our kids are studying, and now the new generation which is coming. So people, they put their kids for career counseling since class 8, and we are building pressure, it's reversed, right? That you have to do this, you have to do that, right? And the reality of the larger population is just 17% have access to something as fundamental as this, right? Is this justified? Another figure, that only out of the 60 odd mainstreams of work, majority of youth only looks at 6 major streams to work upon, right? And 70% of this youth, they do not have any other chance rather than these 6. So if I've selected something, I do not have that chance to change my stream, right? So now there is this gap, and this gap is because of language, because of access, because of our ability. So what should we do? So I think while a lot is happening at policy level, and even corporates through their CSR initiatives are adding to this journey, as a company, what we thought is that going back to our vision statement, how can we empower this youth? And then we tied up or collaborated with a professional counselor, a big name,
and we introduced a lot of these free counseling sessions to empower these students, create that awareness, right? And the whole concept is based, like I was speaking to you earlier, that it is about awareness. It is the first bucket. The second bucket is evangelization, and the third bucket is policy. So the journey always begins with awareness. So this is one example what we are doing for youth. Let's come to women. When we talk about women, we've talked about literacy, but we've also talked about now the increased role of women in economic activities, right? And I think that figure is above 40% if I look at India, or 37%, something like that. But still, at roots, things like gender biases, or things like, there's this term, I'm sorry, I have to refer to, it's called female genital mutilation, and that exists, right? And it's such an irony that in this modern age and time, this still exists, and it's such a big, FGM is such a big crime, I would say. And there's this need for a policy formation around the same. How can we prevent the same by way of policy? At the same time, in terms of awareness, we have been doing a lot of content series to drive awareness around this issue. And one of our reporters for brand Havells India Ltd, in 2022, she won Ladli Awards by UNFPO. So that is the commitment which we have towards this. I would say that a lot can change when we each start playing our role. And for us, contrary to that one-way communication which existed earlier, that whatever we publish has to be consumed by you, we went in for a route of research and trying to understand social issues and cater to same. And that is where I want to now talk a little about the internal changes. So if we have to cater to youth, what is the first thing which we need to do within our teams? Naturally, induct more of youth to produce content. So if I talk about a demography within the organization, out of the 560 team members which we have, about 50% of the team is now Gen Z. So that we understand the sentiments better, we understand what are the challenges and associated problems, right? If we have to cater to women, then we ought to have women on board. And 45% of our team today is inclusive of women, right? And when I look at leadership, because water always trickles from top to down, so out of the 4 leaders, 2 of them are women. So that is the kind of equity or inclusion which we have been able to introduce. Wow, that was really informative. And a round of applause, please. That wasn't justice to the excellent. And I really felt that this initiatives, or these initiatives, I would say, really bring out what the corporate India should emulate, right? And there are enough and more studies also, Bharat, which say that it makes a lot of business sense. There are studies by McKinsey, studies by BCG, EY, which say that, once we understand the youth, and from your startup world, your startup has 63% more chance of survival or doing better because you have a women on board, right? Corporates that have women on their boards, right, have a 21% higher performance rate. So these are statistics which corporate India need to understand, that is making business sense as well. But this is all about, how many of you have heard about the 24-48 principle? Okay, not me, not anyone. Okay, have you guys? Not you, okay then. So, no, not 80-20, not the Pareto rule. This is the 24-48 principle. Sorry for clubbing you guys, but we are from the 24 principle. That means we sit in 24 degrees Celsius rooms and decide for the guys who work in the 48 degrees Celsius. These policies affect those guys a lot. But let me come to one person who comes from 48 degrees. I'm sorry, Uttarakhand is not 48 degrees, but she comes from grassroots, right? It is much better in climate. But
ज्योति जी, आप तो बिल्कुल ये जो हमारी पॉलिसीज वगैरह हैं, ये थोड़ी सी हम लोग अपने एनवायरनमेंट से इफेक्ट हो जाते हैं, बट आप जो काम करते हो वो तो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल लोगों से काम करते हो, और बहुत सारा वो वाला यूथ आज कॉल सेंटर्स में या मीडिया में जाके भी रहता है। उनकी क्या इश्यूज हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उनकी क्या रियलिटी है, जरा आप हमें उससे अवगत कराएं प्लीज। सबसे पहले तो मैं भारतीय विद्या भवन के एसोसिएशन को, इंटरनेशनल सेंटर फॉर कल्चर और कर्मा फाउंडेशन की हमारी ध्वनि जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आप लोगों ने यहाँ पर एक ऐसा मौका दिया कि हम अपने क्षेत्र की बात को यहाँ पर रख सकें। मैं आप लोगों की तरह कॉरपोरेट वर्ल्ड से नहीं हूँ, जैसा आपने पहले कहा, ना ही मैंने बहुत विश्व के दौरे किए हैं। मेरा काम जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ है, और जैसा आपने कहा कि वहाँ की प्रॉब्लम्स, वहाँ की डाइवर्सिटी, इंक्लूजन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये सारे मुद्दे आप लोगों के इन मुद्दों से बिल्कुल भिन्न हैं। हम लोग सब जानते हैं हमारा देश पहले से ही, बहुत पहले से, पुरातन काल से ही वसुधैव कुटुंबकम की पैरवी करता आया है, और उसी को लेकर के हमारे संविधान में भी डाइवर्सिटी और इंक्लूजन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट हमारे संविधान में भी रखा गया है। लेकिन बीच में एक दौर ऐसा आया कि हम लोगों के, या ये कहिए कि अपने क्षेत्र की बात कर रही हूँ, संसाधनों की कमी और जानकारी का अभाव, शिक्षा का अभाव में हम लोग इन सब चीज़ों को भूल गए। डाइवर्सिटी का मतलब सिर्फ बायोडाइवर्सिटी से नहीं, जैसा कि हमारे यहाँ का मुद्दा है। हमारे उत्तराखंड में कई भाषाएं हैं, कई बोलियां हैं। भाषा तो कुमाऊनी और गढ़वाली दो हैं, लेकिन बोलियां कई हैं। कहते हैं कि उत्तराखंड में हर 5 किलोमीटर में बोली बदल जाती है और पानी बदल जाता है, क्योंकि जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जैसे अभी आपने कहा कि आप 48 से तो नहीं, लेकिन हम कहीं पे तो एक मौसम में, जैसे अभी केदारनाथ में आप देख रहे हैं माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, और देहरादून, रुद्रपुर में काफ़ी 20, 25, 40 तक भी टेम्परेचर जा रहा है। तो हमारी परिस्थितियां जो हैं वो बड़ी विकट हैं, और इन परिस्थितियों को में हम लोगों को, सब लोगों को साथ लेकर चलने में बहुत परेशानियां होती हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, जो आज हमारा, आप जो अर्बन एरियाज में हैं, यहाँ पर इंटरनेट और जो आप ये कहिए कि जानकारियाँ जो हैं एक क्लिक में आप लोगों के पास आ जाती हैं। लेकिन हमारे वहाँ क्या है कि जो भी पॉलिसीज या जो कुछ भी सरकार बनाती है वो उन तक पहुँच ही नहीं पाती है। भले ही आज नेट, इंटरनेट कई जगह तक पहुँच चुका है, लेकिन उसकी उपलब्धता प्रॉपर नहीं है। और हमारे वहाँ तो आप इंटरनेट की तो छोड़िए, हमारे वहाँ ऐसी स्थितियाँ हैं जहाँ पर आज भी महिलाओं को, महिला या इंटीरियर में जो लोग हैं, अपनी रोटी, कपड़ा और मकान की परिस्थिति से हम लोग जूझ रहे हैं। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड, या आप ये समझिए कि वैश्विक संसार में हम लोग कहाँ पहुँच पाएंगे, ये तो बहुत अभी समय लगेगा इसमें, लेकिन बहुत सारी ऐसी कोशिशें हो रही हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी तो आप लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे। पहले से ही मैं महिलाओं के लिए जुड़ी रहती थी, लेकिन जब मैं इस पद में आई तो एक दिन मेरे पास ये सोशल मीडिया से मैंने एक सूचना देखी कि एक गांव है बागेश्वर के आगे, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो उस गांव में जो हम हल चलाते हैं ना, तो हल चलाने के लिए आदमी तो वहां से पलायन करके बाहर आ गए हैं, तो महिलाएं जो हैं वो अपने कंधे में हल को रख के जोत रही। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई इस बात से। फिर मैंने वहाँ के डीएम से बात करी, तो उन लोगों को हमने पावर टिलर दिलवाए, उनको ट्रेनिंग करवाई। तो इस तरीके से हम टेक्नोलॉजी जो है उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या है कि आज भी लोगों में शिक्षा का अभाव है,
शिक्षा हम लोग शिक्षित तो हो गए हैं डिग्री वाले, लेकिन हम लोग अपने अधिकारों को अपने अधिकारों में जो हमारी योजनाएं हैं उनको हम कैसे यूज कर सकें वो नहीं समझ सकते हैं। तो ये इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी कई, मैं आप लोगों को कह नहीं पाऊंगी यहाँ पर, बहुत सारी ऐसी विविधताएं हैं, या ये कहिए कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम कोशिश कर रहे हैं सॉल्व करने की, लेकिन उन लोगों को हम इस स्तर तक लाने में कब तक कामयाब होंगे ये पता नहीं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मैंने ये सोचा क्या कोशिश भी की पंचायत स्तर में, जैसा कि आपको पता है मेरा राज्य मंत्री का दर्जा, लेकिन मैं देहरादून में न बैठ के या एक बड़े बड़े स्टेशन में प्रोग्राम न करके एक छोटे गांव में, इवन पंचायत स्तर पे वहां पर सारे गांव के लोगों को बुला के, सारे अधिकारियों को वहां पर बुला के उन लोगों को जानकारियां देते हैं, ताकि वो लोग अपने जो उनकी अधिकार हैं, जो उनके बारे में सरकार ने पॉलिसीज बनाई हैं, पॉलिसीज तो बहुत सारी बनी हुई है हमारे यहाँ महिलाओं के उत्थान के लिए, ग्रामीणों के उत्थान के लिए, लेकिन क्या है कि हम लोग जानकारी क्या होगा उनके पास पहुंच ही नहीं पाती उनको। तो हम लोगों का है कि सबसे बड़ा, तभी हम लोगों की विविधता एक साथ वो होगी, जो यही जो हमारा जो समता का वो है, तो हम उन लोगों तक ऐसे पहुंच सके, उन लोगों तक हम ऐसे अपने कार्यक्रमों को पहुंचा सकें कि वो अपने रहन सहन और खान पान और रहन सहन के स्तर को सुधारते हुए अपनी शिक्षा को सुधारें, ताकि जब वो शिक्षा को सुधारेंगे, मेरा ये मानना है, अपने आप लोगों का कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जब तक मेरा ये मानना है कि जब तक हमारी शिक्षा, खाली डिग्रीज नहीं, शिक्षा जब तक हमारी ऐसी नहीं होगी जो हम लोगों को परिपक्व बनाएगी, हमारी बुद्धि को परिपक्व बनाएगी, जब तक तब तक हम लोग बड़ी मुश्किल से आगे आ पाएंगे या इन लोगों को सम्मान कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, अगर अभी ऐसी स्थिति आती है पॉलिसीज के कारण कि पास करना है, देखना नहीं है, तो एमए करे लोग भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते या लिख नहीं पाते हैं या नॉलेज नहीं है उनके पास। तो जब तक हम लोगों की शिक्षा नहीं सुदृढ़ होगी, मेरा ये मानना है कि शिक्षा के बिना कोई भी कार्य असंभव है, और शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिए कि वो हमारे बुद्धि को या हमारे विवेक को जागृत कर सके। ये मेरा एक्सपीरियंस है। एक मैंने इंक्लूजन का जो हमारा ये मुद्दा है, इसमें मैंने एक जो हमारी बंदी महिलाएं जो है, ये शब्द मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, जो जेल में हमारी कैदी महिलाएं होती हैं, तो मैंने एक दो बार जेल का भ्रमण किए थे, तो उन लोगों ने कहा कि मैडम, मैंने उनसे पूछा कि आपकी क्या परेशानियां हैं, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैडम जैसे हम यहाँ बैठे रहते हैं, मैंने भी ये समझा कि बैठने से आदमी को, हमारे कहावत भी है कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो निगेटिव थॉट्स आते हैं, क्योंकि माहौल वहाँ पर निगेटिविटी का माहौल होता है, तो उनके निगेटिव थॉट्स आते हैं। तो उनको ये लगता है कि, उन्होंने भी मुझसे कहा, मेरे भी दिमाग में है कि अगर हम उनको कोई काम करवाएं, कोई चीज सिखवाएं, तो उनका ध्यान पॉजिटिविटी की ओर रहेगा। और मैंने फिर अपने अल्मोड़े जेल में ये प्रयास किया, तो वहाँ की एक महिला के साथ मैंने मदद ली, तो उनको हमने ऊन के फूल बनाने सिखाए। तो बड़ा शुरू में तो कुछ लोग तो हम नहीं सीख रहे, लेकिन हमने 3 घंटे की उनको ट्रेनिंग दी, उस ट्रेनिंग में सब आगे वापस, हम भी सीखेंगे। तो बाद में मैंने उनसे कहा कि जब उन महिला से मैंने कहा कि आप इनको ऊन दो, सामान दो, जब आप इनको ऊन और सामान दोगे और ये फूल बनाएंगे, किसी से खराब बनेंगे, किसी से अच्छे बनेंगे, जैसे प्रैक्टिस मेक से मैन परफेक्ट, बढ़िया फूल बनेंगे, तो उन फूलों को वापस लेकर, बाजार में मालाएं वगैरह बन के बिकती हैं, तो वो उन्होंने वापस लेकर के उन बाजार से मालाएं बेची, तो उनको बनवाई जब वहां पहुंच गई, तो उनके पास एक पैसा जो जेलर के पास जमा रहता है, अब वो लोग जब भी एक नॉर्मल जिंदगी में जाएंगे, क्योंकि जो महिलाएं कोई अपराध करती हैं, कोई अपराधी प्रवृत्ति की मोस्टली महिलाएं नहीं होती, वैसे तो कोई पैदा होने से अपराधी नहीं होता, परिस्थितियां उन्हें अपराधी बना देती हैं, तो किसी परिस्थिति में अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जब वो कोई अपराध कर रही होती हैं, तो जब वो उनके पास एक हुनर होगा और उनके पास उस काम को शुरू करने के लिए पैसा होगा, तो वो बाहर जा करके एक अच्छी जिंदगी, एक सम्मानजनक जिंदगी जी पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने जेल की महिलाओं को, फिर उसके बाद मैंने हल्द्वानी में शुरू किया, होली का टाइम था, हमने कलर्स बनवाए उनसे, चूड़ी तो मैडम ने देखी है, चूड़ियाँ बनवाई हमने उनसे, तो जो हमारी पुरानी वेस्ट चूड़ियाँ हो जाती हैं, उनको रेशम के धागे से बना करके हमने उन लोगों को चूड़ियाँ बनवाई। तो एक उनको इंटरेस्ट भी आया, क्योंकि महिलाएं हैं, चूड़ी वगैरह में, फूल वगैरह में उनको इंटरेस्ट भी आया।
तो इस प्रकार से हमने जो हमारी महिलाओं को अपने साथ जोड़ने का, एक समाज के साथ जोड़ने का और उनको एक आगे लेके चलने का प्रयास किया। ये ऐसे कुछ छोटे उदाहरण हैं, बहुत बहुत बढ़िया। मतलब रियल इंडिया से, रियल भारत से हमें अवगत कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और रियली में यही वही 24 और 48 का प्रिंसिपल यही है कि हम लोग कितना अनभिज्ञ रहते हैं इन बातों से, जो एक ग्रास रूट लेवल पे, एक जमीनी स्तर पे आप लोग रोज फेस करते हो। और हम लोग को लगता है कि अब जैसे आपसे मेरी बात हो रही थी और 2 मिनट आपके चाहूँगा अगर आप उस पर भी बात करें। जब कोविड हुआ तो किस तरह से वहाँ पे डेटा ना होने के कारण किस तरह से परेशानी आई, और यहाँ पे तो हम लोग ने बच्चों को स्कूल, और इनफैक्ट मतलब हम लोग, यू वर टॉकिंग अबाउट प्रिविलेज्ड पीपल, माय चाइल्ड वाज डूइंग इट फ्रॉम 3 डिवाइसेस। एक लैपटॉप रखा हुआ था और उन्होंने कहा नहीं पीछे भी एक होना चाहिए कैमरा, सो दैट वन नीड्स टू नो कि यू आर देयर। तो 3 डिवाइसेस वर बीइंग यूज्ड फॉर 1 चाइल्ड, राइट? और वहाँ आप प्लीज, उसका बिल्कुल उल्टा था। 1 डिवाइस इज यूज फॉर 3 चाइल्ड, वो भी जबरदस्ती मजबूरी में बेचारों को खरीदना पड़ा। मैं 1991 से सोशल वर्क में स्कूल चलाती हूँ, चैतन्य मॉन्टेसरी स्कूल मचखाली करके। चैतन्य हरि चैतन्य पुरी जी मेरे गुरु जी का नाम है, उन्हीं के नाम से, क्योंकि मैंने उन्हीं की प्रेरणा से वो स्कूल खोला था। तो जब ये पैंडेमिक आया तो अब ये हुआ कि बच्चों को ऑनलाइन कराना है, तो अब ऑनलाइन कराएं कैसे? ना तो लोगों के पास डिवाइसेस थी और ना ही इंटरनेट अवेलेबल था, क्योंकि कहीं कहीं जगह पे आता है, थोड़ी देर के लिए आया फिर चले गया, जैसे वहाँ पे इतना ज़्यादा उसकी पहुँच नहीं है, या कहिए कि इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ पे। अब मैंने जब गार्जियन से कहा तो उन्होंने कहा मैडम कैसे पढ़ाएं, क्लास तो हम ले नहीं सकते, गवर्नमेंट के नियम थे कि आप क्लास लीजिए, पूरा प्रेयर से शुरू करिए और वो करें। तो मैंने कहा कि भाई हमें तो बच्चों को पढ़ाना है, कैसे भी पढ़ाना है, गवर्नमेंट का नियम है, लेकिन अब हम उनसे कैसे कहेंगे कि आप 3 मोबाइल खरीदो? जिस आदमी को महीने में 10,000 या 9,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, तो वो अपने परिवार का पोषण, लालन पालन करेगा या मोबाइल खरीदेगा? तो बड़ी मुश्किल से लोगों ने, कुछ लोगों को कन्विंस किया, कुछ लोगों ने पड़ोसियों के नंबर दिए जिनके पास मोबाइल थे। तो पड़ोसी को हम जब मोबाइल, पड़ोसी का इंस्ट्रक्शन आता था इतने बजे से इतने बजे तक भेजना, नहीं तो इसके अलावा मत भेजना, हम लोग कहीं और रहते हैं, ये रहते हैं। तो इस प्रकार से तो हमने मोबाइल में फिर हम लोगों ने क्या किया कि ऑडियो, पहले वीडियो बना के भेजे, तो वहाँ से जवाब आया डाउनलोड नहीं हो रहे वीडियो मैडम, अब क्या करें? फिर कुछ ऑडियो बनाए, कुछ लिख करके बच्चों के लिए, कुछ ऐसे करके हम लोगों ने वहाँ पढ़ाई करी, क्योंकि वहाँ पे इतनी पॉवर्टी है, इतनी गरीबी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है। या गरीबी भी मत कहिए, मैं तो ये भी नहीं कहती हूँ कि गरीबी है, मैं ये कहती हूँ कि जागरूकता नहीं है, एजुकेशन, हेल्थ, उसके प्रति जागरूक नहीं है, एजुकेशन के प्रति जागरूक नहीं है। ये ऐसी भी स्थिति नहीं है कि लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, लेकिन जागरूकता चूंकि नहीं है तो उनको सेकेंडरी चीज लगती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ, कहना तो नहीं चाहिए, कि अगर हम जिस दिन बच्चों को विदाउट यूनिफॉर्म बुलाते हैं, तो उस दिन बच्चे जो ड्रेस पहन के आते हैं, भले ही वो 2 साल, 4 साल, 5 साल में एक खरीदते होंगे, तो 1,000 रुपये, 500 रुपये, 500 से ऊपर की खरीदें। लेकिन जब स्कूल यूनिफॉर्म की बात आती है तो कहते हैं मैडम अभी हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। तो वो ये यहाँ पर जागरूकता की बात आ गई, क्योंकि ऐसा आज के जमाने में मेरे को नहीं लगता कि कोई इतना गरीब है कि वो बच्चों के लिए 2 यूनिफॉर्म साल भर में नहीं बना सकते, लेकिन वो जागरूकता की कमी। तो उसी प्रकार से हम बच्चों को जागरूक करते हैं, उनके पेरेंट्स को जागरूक करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, गाँव-गाँव में जाते हैं। अब तो मेरा क्षेत्र हट गया क्योंकि मैं स्कूल नहीं जा पाती हूँ, लेकिन गाँव-गाँव में जा करके लोगों को यही समझाती हूँ, छोटे छोटे गाँव में जा करके वहाँ लोगों की मीटिंग्स करती हूँ, उनको ये समझाती हूँ कि भाई हम अपने बच्चों के लिए, एक सबसे बड़ा मोबाइल आजकल प्रॉब्लम है जो हम लोगों ने एक मुद्दा बना रखा है आजकल, कि बच्चों को मोबाइल आप दीजिए, क्योंकि हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन हमको उनके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा अपने बच्चों के ऊपर। तो ये सब चीज़ें हम मैं जा करके उन लोगों को मिलाती हूँ अपने साथ, सोलर एनर्जी का यूज़ करने के लिए उन लोगों को प्रेरणा देते हैं, क्योंकि एक मानसिक रूप से हम लोग कहते हैं कि बिजली आएगी तभी हमारी बिजली होगी। तो अब वैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारी वहाँ पर सुविधाएं दी, लेकिन वही फिर बात आ जाती है कि जानकारी का अभाव है, उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे हमें वो करना है। फ़ोन पे कहेंगे मैडम हमारे घर में सोलर, में एक एप्लीकेशन तो लिख दो किसी को
जब एप्लीकेशन लिखोगे तो सब काम हो जाएगा। तो वही जानकारी नहीं है कि भाई एप्लीकेशन लिखने से कुछ होता है। तो यही सब हमारे मुद्दे हैं, छोटे छोटे मुद्दे हैं वैसे तो देखने में, लेकिन वहाँ पर के लिए यही मुद्दे बहुत बड़े हैं कि कैसे हमारे बच्चों की एजुकेशन होगी, कैसे। तो मेरा, आप इतने सब लोग यहाँ पर बड़े बड़े क्षेत्रों से हैं, तो आप लोगों की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के उसमें मैं ये कहना चाहूँगी, वैसे तो मैं आप लोगों से पूछना भी चाहूँगी कि हम लोग कैसे अपने क्षेत्र को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जैसे छोटे छोटे जैसे कॉल सेंटर होते हैं ना, ऐसे छोटे सेंटर करके वहाँ पर लोगों की काउंसलिंग की जाए। तो जब उनकी हम काउंसलिंग करेंगे, अब एक बड़ा आपने देखा होगा यहाँ भी होता है, जो छोटे मतलब ऐसे लोग जानकारी का अभाव जिन लोगों पे होता है, तो वो कहता है कि हमें क्या मिलेगा। जब हमारा प्रौढ़ शिक्षा चल रहा था तो उन्होंने कहा कि हमें क्या मिलेगा पढ़ के। तो हम उनसे कहते थे भले ही वो हुआ नहीं, हमने कहा तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे बच्चे को नंबर मिलेंगे। तो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया कि उन्हें लगा कुछ मिलेगा, बच्चे को नंबर मिलेंगे। और बच्चे को नंबर कैसे मिलेगा, तो पढ़ के ही मिलेंगे। लेकिन उनके दिमाग में आ गया हाँ बच्चों को पढ़ के हम पढ़ेंगे तो बच्चों को नंबर। हमने कहा हर बच्चा अपने पेरेंट्स को पढ़ाएगा और उसको नंबर मिलेंगे। वैसे हमने उनको वैसे कुछ ऐसे दे करके उन लोगों को वो किया, लेकिन बस ऐसे ही छोटी छोटी वो हैं हमारी समस्याएं हैं, क्योंकि हम छोटी जगह से छोटे क्षेत्र से आए हैं। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इनफैक्ट आपने जो जागरूकता की बात करी ना, इनफैक्ट कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम आता है, आप लोगों ने देखा होगा शार्क टैंक, उसमें एक साउथ के एक जने ने यही जो आपकी इतनी सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, मतलब अगर वो गवर्नमेंट की आधी भी पॉलिसीज को यूज कर ले तो इतनी है, तो उसने ये अपना स्टार्टअप बनाया कि मैं ये पॉलिसीज लेके जाऊंगा आपके पास। आई विल मेक श्योर दैट द पर्सन is utilizing those policies, you know, that itself is a great start. So समय का अभाव है, आपको और सुनते हैं, but coming back and very quickly, you know, I think it's time to wind up. So Bharat, back to you in terms of, you know, how to really, I mean, if you had a crystal ball, what is the kind of 2 or 3 things of possibly from the corporate world or from the government side that should change in order to bring this entire concept into the forefront? Like, you know, we don't, you know, miss these things when they are right in front of you. Thank you, sir. So, clearly, again, I'll go back to the 3 buckets of literacy, advocacy, and policy. And I think, how many of us have heard about general purpose technology or its latest avatar, ChatGPT, right? And going back to emerging into generative AI and the impact it is creating, right? So we need to understand that what is this technology, its capability, its ability to take away jobs or generate jobs, right? And it will cause a big disruption, right? So there has to be an increased literacy drive around it. Followed by, I think, very important that both sponsored by corporates within their own institutions and also as funded by states for public at large, advocacy towards learning and adapting this technology. I think that is the need of the hour, because organizations which fail to understand the impact might suffer a lot. And end of the day, organizations are sum of its people. And if people, they do not progress, then organizations are doomed to fall, right? And the last thing I would say is policy, that while the democratization of internet has given access to information, created new opportunities, but in advent of generative AI, there will be a sharp increase in misinformation by way of fake news, or as we call synthetic media, and the lines between the real world and an imaginative world or a projected world, they will all diminish. This would lead to increased hate, increased polarization, increased so many different factors. So I think it's very important for the government and policy makers to
collaborate with the tech firms and all interested or dependent verticals to establish an ethical framework of this technology deployment, a way to identify, and so many other things. Because this is going to change, or it can impact the world which we have imagined in a big way. Absolutely, and this is going to be a reality for a lot of youngsters sitting amongst us today. This is how the world is going to change. But the other factor which possibly your industry will also lead, Bharat, is about the consumer. So as they say, consumer is the queen. Yeah? So consumer is the queen. So she will decide in terms of whether this is, and there's so many examples of many, beauty products and fashion products realizing and changing their stance as a result of what the customer or what the consumer wants or doesn't want. But the last word should remain with the lady. So I'm coming back to you again, and you did mention that while you were of an in an industry where people are the business, and people, as they say, never go out of business, right? So what do you feel should change, and what would your crystal ball gazing would be? Thank you, Saurabh. So, I'll first start with how the government can help push, because I guess that's one of the mandates of this panel. That's something that goes back to the policy makers. And second, I'll talk about what corporates can do differently. So from a government perspective, we've all noticed that because government mandated that there needs to be at least one women director in the board, it led to a huge increase in the leadership levels for women in private sector. We know that the government mandate on CSR has really ensured that the private sector takes more ownership towards social responsibility. There's also a mandate by the government which says the workplaces should be more accessible. That's the reason suddenly we saw a spurt in the larger IT companies building accessible workspaces. Ramps is the example that everyone talks about. I think beyond this, what the government can do is ensure that DE&I reporting is mandated in the annual reports. So right now it's not mandated. Some organizations do talk about women, but it's only entry level is 40%, which looks like a great number. Oh my God, everything looks hunky-dory. But let's talk about how exactly the organizations are performing in terms of not just women, but specially abled, differently abled, LGBTQI. What are the percentages at leadership level? What is the entry level? So that the government and the organizations can do a root cause analysis to figure out where are we lacking. So despite so much of work that has gone into this, why do we still not have decent numbers? I think government can also build incentives, tax SOPs, create awareness, education to the small and medium industry, do something for the smaller towns and villages, get them into mainstream, basically encourage corporates and private sector to go into the smaller towns. Right? Why not? Are we doing enough there? I really don't think so. Right? And that's where the corporates need to partner with you, Jyoti ji, to make a difference. And from a corporate side, I think there needs to be. There are three foundational elements, right? So strategy, governance, and leadership support. So instead of doing, applying band-aids, corporates need to have a wholesome strategy for DE&I, look at the root cause, look at building inclusive leadership and leadership pipelines, building inclusive behaviors, changing mindsets, and bringing structural changes to support policies and processes which encourage what we spoke about and DE&I. Thank you. It was very well said, and
kind of resonate with a lot of, not so much on the government side, because government is doing what it is doing, but a lot on the corporate side. And I believe there is a lot which corporates can do, should do. And why should it be mandated? It should come from the heart, right? I mean, we are a country, we are a land where we have believed in this principle, and the minister so beautifully espoused the cause that, you know, I mean, as youngsters, it was quite all right, even at the risk of saying that, to hold boys' hand and going around. I mean, would people say that, no, they are from a different LGBTQ community? I mean, it was so natural, right? So we are a very accepting society, so it should come from the heart. And I am reminded of our founder chairman, who often says that if your mind can conceive it and your heart can believe it, right, then you can do it. So with those thoughts, I think, Bharat, your thoughts about how the younger generation will actually make that change, absolutely, and the content will support that. GPT is something that's going to be very, very relevant. Jyoti ji, your thought about how corporate India need to participate at the grassroots level and understand the real problems and come up with the real solutions. And Payal, your wish about, how corporates need to do much better. Government initiatives will certainly help, but how we need to, really make the difference from the heart. I think on that note, ladies and gentlemen, can we hear it for the great panelists that we have?